won by Team Red. And welcome back, Phantom. Thank you, Ghost. Round one was a difficult call. We had to because the round went ahead. Both teams engaged, and I think it's also an indication for other players as well that in future, if something of that sort happens, that if you want to knock off a round, you just disengage because once that both teams are engaged, unfortunately, the organizers have to call it a round. बिल्कुल ऐसी बात ही है, टफ कॉल होती है लेकिन करना पड़ता है। और दे यहाँ पर हमने दोनों टीम्स को गो अहेड प्रोवाइड कर दिया है। नाउ दे आर इक्वल 2v2 इस दफ़ा, एंड लेट्स होप के बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड चले पिछले वाली की नस्बत। Both teams are flying, but it's going to be an interesting takeoff for 13 and Genesis because I think they've taken a very short mode on the runway. 13 with his two engines really pushing it, and I think he is paid for the full runway and he's using the full run. So that's a good approach. Following, Yep, and he's airborne, so yeah, needs he's to get his going gear up. Genesis following closely behind. Oh, I think And 13 ये मिस्टेक कर गया है। इसने गियर अपने इन नहीं किए एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इसके गियर फंस जाएंगे। no, he just about made it. He just made it. Yep, that's interesting. So 13 is airborne, safe and sound. Not a very convincing takeoff, not for takeoff, but Genesis is closing in far behind. 13 using all the power of his F-15, he's just buzzing away. And I think the server is performing much better. And Gatling with his two AM9Xs, interesting loadout. And also Titan with AM9Xs as well. So I think they'll have a very aggressive approach with this one. बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक विद इन विजुअल रेंज आके इनको करने के लिए जो है ना करना पड़ेगा इस दफ़ा। और दे आर ऑलरेडी डाउन वन राउंड, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो चल रहा है, बट लेट्स सी। I think they'll have to think out of the box. Again, they know that the F-15 is notorious for spam ramming. So if they can stay low, bring the fight to them rather than go into a fight against an F-15. So that could be an interesting take on this one. बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जब हम इंटरेस्टिंग टेक्स वगैरह की तरफ चल ही रहे हैं, तो फैंटम, हाउ डिड यू गॉट इनटू डीसीएस और फ्लाइट सिम्स इन पर्टिकुलर? Flight sims, it's long time ago. My first simulator that I got hang of was in 1993. It was a Retaliator. I won't call it a simulator, but it had some X plane from USAF, and we used to play back in the day. And one thing that I fondly recall, it used to have a missile called a rear binder. So if you had an enemy at your six, it would fire backwards. That's interesting. Yep, we used to call it back. I mean, it was a rear winder, but we used to call it back winder. So yeah, I mean, that was an interesting concept back in the day. And then when it comes to DCS, in early 2000s, I had Flanker 2.0. Then we had Lock On Modern Air Combat. Then Flaming Clips 2. Then Flaming Clips 3. And डिड यू the list एवर goes प्ले on. जेन्स की जो सारी की सारी सीरीज थी? Genes back. Since it's DCS basically. Also, I'm leaving out Janes and I'm leaving out Microsoft Flight Simulator. Otherwise, ये मैच गुजर जाएगा और हम मेरी सिमुलेटर हिस्ट्री की बात करते वेरी रहेंगे. ट्रू, वेरी ट्रू। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद डीसीएस? कब से स्टार्ट की हुई है खेलना आपने? DCS, I started in 2014, I guess. I started with Flaming Clips 3. That is when I bought Flaming Clips 3, 2014 में. और तकरीबन around that time ही I got my first HOTAS, a very basic HOTAS. और I used to play very casually, but I must admit that properly and with जिसे कहते हैं ना flying sense, I really started playing with the Thunderbolt Vipers. आपका अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है लोगों के साथ? यू बीन विद अदर इंडिविजुअल्स आई वुड से एज वेल, जहाँ पे गेमिंग वगैरह में,
और देन कमिंग ओवर टू थंडरिंग वाइपर्स के साथ, और एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी कोलैबोरेशन और वर्क चल रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे जो सारे के सारे हमारे पास लोग हैं? Basically not really. मैं फ्लाइट सिमुलेशन कम्युनिटी से आई wasn't really connected, to be very honest. मैं एक साइलो में ही काम कर रहा था. The only person I knew was Genesis. So for a very long time I was working in a silo because Genesis was connected with the Microsoft Flight Simulator community, and he was connected with the Thundering Vipers and other DCS communities. I knew that other DCS communities existed, but मेरा क्योंकि ज़्यादा शौक फिल्म मेकिंग की तरफ था, मूवी मेकिंग की तरफ था, तो DCS के अंदर जब ये खास तौर पे F-16 और JF-17 के सिमुलेटर्स अनाउंस हुए, तो 3-4 years ago ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि I would make something, would make something out of it. I mean, I wasn't really sure कि DCS World Pakistan would be a thing, because I knew that there are other communities out there, and I was pretty sure कि कोई ना कोई होगा. So that's that. So we'll return to that, but we see that the teams are entering the battle zone, and we see that Titan has dropped his tanks, and सही, और आई they are थिंक now. जेनेसिस ने भी अपने टैंक ड्रॉप कर दिए हुए हैं, और गैटलिंग इज इन फ्रंट कमिंग इन एग्रेसिवली। दोनों टीम्स सही स्पीड के साथ आ रहे हैं, और एल्टीट्यूड इनका सही Yeah, जबरदस्त। I want to see the F-15. 13 ने अपने tanks dump कर दिए हैं और 40,000 फुट की बुलंदी पे. He's really increasing his speed now. Not really the altitude, but his speed. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बीवीआर टैक्टिक्स जो कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं? मैंने तो अभी तक नोट किया है कि इट्स मोर लाइक जस्ट गो स्ट्रेट इन और बस मिसाइल्स मारो, और इंगेजमेंट ही इंगेजमेंट हो रही होती है। I think BVR tactics, it's it's a Pandora's box. I mean, हर टीम ने अपने अपने tactics बनाए हुए हैं. And there we go. We've got Fox from Okab. So 13 is in the game. ओहो, दूसरी तरफ से भी आप चेक करें जरा, वॉली आ रही है। So we've got Titan has sent a Fox. Gatling has also sent a Fox. So both these guys have fired their missile, and now. और ये ओकाब और जेनेसिस की तरफ से एक एक मिसाइल, और सो अगेन स्पैम चल रहा है जी, मैं तो यही कहूंगा। I am not a big fan of spam, but I think जब आपके पास F-15 हो और आपकी situational awareness lacking हो, तो I think it's a spamming is a gamble. I mean, we can talk about tactics all day long, but not a big fan of spamming. और ये एक मिसाइल जी ओकाब को ट्रैक कर रहा है। Genesis is going down. His send is 2 missiles. I mean, not going down. I mean, he's losing altitude. और ये ओकाब के ऊपर से भी मिसाइल गुजरा है जनाब। Oh, jeez, that was a close one. आई थिंक ब्लू टीम ने बड़े इजीली डिफीट कर दिए हुए हैं। इट्स 4 एम 120 स्पेंड फ्रॉम टीम रेड। Oh man, so Okab has got he's got 2 AMRAMs on him. Genesis के पास भी 2 AMRAMs हैं. और ओके, नाउ रिकमिट हो रहा है जनाब जी बिटवीन गैटलिंग एंड जेनेसिस, और गैटलिंग हैज मेड द फर्स्ट शॉट जेनेसिस के ऊपर, एंड दैट्स अ वेरी फास्ट मिसाइल कमिंग इन टुवर्ड्स जेनेसिस, और जेनेसिस ने भी फायर बैक कर तो दिया है। इफ ही कैन गेट बैक इन द माउंटेन ही विल बी सेफ। दिस विल बी अ क्लोज मिस, ही नीड्स टू डाइव मोर एग्रेसिवली, और मिसाइल डिफीटेड। ओहो, काब और टाइटन के दरमियान में बड़ी क्लोज इंगेजमेंट है जी। आई थिंक टाइटन्स डाउन, टाइटन विल गो डाउन यहाँ पे। ओ नेवर माइंड, दैट्स अ स्प्लैश ऑन उकाब जनाब जी, उकाब इज डाउन। वाओ, वेरी नाइस टर्न टाइटन की तरफ से। सो इट्स लाइक अ 2v1 सिचुएशन गोइंग ऑन, और यहाँ पर अब जनाब जी 9 एक्सेस जो है ना शाइन करने चाहिए गैटलिंग के, और जेनेसिस इज कमिंग इन फ्रॉम द फ्रंट। सिचुएशनल अवेयरनेस वेल, ये जनाब जी माउंटेन के बिल्कुल बराबर से वो मिसाइल आया जी, और आई थिंक डाउन। वाओ, वेरी नाइस किल फ्रॉम जेनेसिस गाइस। Okab is down. He has just hit the water.
So Genesis is airborne, and we've got Titan. No, no, even Gatling is airborne. I think Jeff को उससे hit हुआ है. Titan seems to be airborne, but I think he's inoperative. Bloody hell, Uh, check करें जनाब जी आप और ये. I don't see damage on his aircraft. No, he's fine. They're Titan's both fine. fine, okay, and Genesis Genesis is is fine. down, guys. Oh, Genesis is down. He's down. Wow. That's an interesting turn ठीक हो गया, around. ठीक हो. Very nice, guys, very nice. Hey, this is wrong. Hold on, everyone, please hold on. We're still streaming.